हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये 232 लेक्चर में ये प्रॉब्लम लेके आए हैं जो जनरली आपके कंपटीशन में एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। तो इसमें ये क्वेश्चन है, ए 3 hinge parabolic arch has a span of 20 meter and rise of 3 meter. A point load 60 kilonewton moves on the span from left to right. Find maximum positive and negative moment at the section 5 meter from the left end. Find also absolute bending moment at the section on where it occurs. तो यहाँ ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले आप यहाँ देखो कि इसमें एक पैराबोलिक आर्च है हमारा, और उसमें ये जो हाइट है वो 3 मीटर है और ये आपका 10 मीटर और ये आपका 10 मीटर है। स्पान 20 मीटर आपका टोटल है। यहाँ आपका एक हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट लगेगा H और यहाँ पर आपके रिएक्शन होंगे BA और यहाँ पर आपका रिएक्शन होगा BB और एक यहाँ थ्रस्ट आएगा H। तो ये 5 मीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है आपका। दिस इज यू कैन से इट डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर पे आपका कोई पॉइंट P है जिसमें कि ये लोड आपका 60 किलोमीटर का रन कर रहा है। तो यहाँ सबसे पहले इस ऑर्डिनेट को हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। y 880 D पॉइंट पे करते हैं। दिस इज योर C पॉइंट, हिंज है यहाँ पर। दिस इज हिंज, दिस इज हिंज, दिस इज हिंज। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि आर्च के लिए क्या है, y इक्वल टू 4h अपॉन l स्क्वायर x l माइनस x। कहीं पर ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना हो तो दिस फार्मूला आप 8ax बराबर, मान लीजिए आप 5 मीटर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो y इक्वल टू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 20 स्क्वायर इंटू x इक्वल टू 5 l माने 20 माइनस 5। ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो गया 12 अपॉन 20 इंटू 20 इंटू 5 इंटू 15। तो ये देखते हैं कितना आता है। 5 4 3 4 4 3 12 3 9 by 12 9 by 4 3 3 9 by 4 9 by 4 4 8 4 8 25 सो 4 8 10 7 8 2.25। so y equal to your 2 point, y equals to 2.25. this is your 2.25 meters. now we can, हम जो है ऑर्डिनेट्स इसके अगर आप चाहें तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, इसका अगर हम लोग ड्रा करना चाहेंगे तो ये बीएम को ड्रा कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे आपका होगा दिस डायग्राम a l minus 8 upon l। तो फॉर bm ड्यू टू beam equals to x l minus x upon l। x equals to 5 meter, so this is 5 20 minus 5 divided by 20, so this is your 5 1 by 4 into 15, so 4 3 12 4 3 12 3 28 this is 3.75। and what about for hy? hy equals to h into b, h into b equals to l upon 4h into b is equal to your 2.25 we have already taken, so this is 20 divided by 4 into h is 3 into 2.25, so this is 5 5
This is 0.75 into 5. This is also 3.75 unit. This is same. So the bending moment diagram will be something like this. This is what we will cut. This is 3.75. This is also 3.75. 3.75. So in this condition, the maximum bending moment we can find out. Where the maximum bending moment will be there. This will be maximum bending moment. Positive bending moment. This is your positive, and this is your negative. So let us find out the ordinate. Ordinate. This is your this point may be B. This is D1 and this is D2. This is your C, C1 and C2. So D2 equals to 3.75. Now we have to find out D1, D2. D1, D2 equals to this 3.75 divided by 10 multiplied by 5 D1 D2. Y upon this 5 equals to this 37.5 divided by 10. So this will be your 5 into 2. This is 1 point. What is solar? Or 75. 1.8. 1.875 meter. So this is d by d2, the d1 d2 equals to your 1.875. So d d2 d1 equals to ordinate, that is 3.75 minus 1.875. So कर लेते हैं. This is your 3.75 minus 1.875. This is 1.875. This is coming 1.875. This is coming 1.875. Maybe some unit. Now this is height we are getting for C1, C2, C2 equals to 3.75 meter unit. And what about this? This is C1, C2 is this much is part of this. So 3.75 upon 15. This is 15 multiplied by 10. This is a distance of 10. So this will be your C1, C2 from this triangle D, D2, and you can say O. This is your B, this is your B point, this is your A point. So this is your, from this figure D, D2, B. This 3.75 divided by 15, and this C1, C2 divided by 10. So C1, C2 equals to this 357 into 2. This is 3, 2. So this will be 1, 1. 3.25, which is 1.25 into 2. So this will be 2.50. C1, C2 is 2.50. So C
C1 equals to 3.75 minus 2.53. So this will be your 1.25. This is 1.25. So you can always find out this value. So this is 1.25. So for maximum bending moment, we have DD1 and CC1. If you put load at this at 60, we'll get the maximum bending moment, and if you put the load over here, we'll get the maximum negative moment. So maximum bending moment will be how much? That will be maximum bending moment. Will be how much? This will be 60 into 1.875. This is your maximum BM. And maximum, this is positive, and negative BM equals to 60 into 1.25. This is ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.875 multiplied by 60 will get 12.5 kilonewton. This is maximum kilometer meter. And what about this? 1.25 into 60. This is 75. This is 75. 75. This is minus 75 kilometer meter. So these are two values which find maximum positive and bending moment out in this section 5 meter from the left end. So these are the values for the moment. Now let us see how you will find out the absolute. इसको रब कर दे रहे हैं. How to find out the absolute bending moment, positive moment and